अगर एक वर्ड ही आप रिपीट करोगे बोलने में या लिखने में, देन यू स्टॉप लूजिंग योर वैल्यू. आपका इंग्लिश का क्लास और स्टैंडर्ड नहीं रहेगा. इफ यू वांट टू मेंटेन दैट क्लास एंड स्टैंडर्ड, तो वर्ड्स चेंज करने. जैसे एक देयरफॉर है, स्टॉप यूजिंग देयरफॉर नाउ. इसकी जगह यूज करो हैंस, thus एंड ergo accordingly. ये वर्ड्स यूज करो, योर इंग्लिश बिकम गुड. एग्जांपल से समझते हैं. She did not meet me, hence she did not get the gift. He was late, thus he had to miss the meeting. The deadline was moved up. Accordingly, we got some more time. He is the best candidate. Thusly, he was hired by me. She rejected me. Ergo, she missed the opportunity. Now keep following PSL. Save कर लो रील को, कहीं मिस हो जाए.